connective tissue proper test. In batch 2, I think so I have not given. Okay, so we'll quickly recap that part about the connective tissue. Okay, guys? Now, as the name suggests, that it's a connective tissue. It is a tissue which is used for binding and support. Connective tissues help in binding and support. Sir, what do you mean by binding? दो चीजों को जोड़ने के लिए. जैसे कि सर आपका स्किन है, स्किन के नीचे कौन है? मसल्स है. तो स्किन को मसल्स के साथ कौन जोड़ेगा? कनेक्टिव टिश्यू. बराबर है. आपके मसल्स है, वो किसके ऊपर अटैच्ड है? बोन्स. तो बोन्स क्या है? सपोर्ट है. किसके लिए? मसल्स के लिए. और बोन्स है क्या? दे आर अ कनेक्टिव टिश्यू. So can I say connective tissues are helping in binding and they are helping in supporting. Shall I continue, everybody? Yes. Now, some of the specialities of the connective tissues are, वैसे ना जब हम एक टिश्यू की बात करते हैं ना, सब उसके बारे में नहीं सोचने का, ऐसा हॉरिजॉन्टली सोचने का. कि जैसे सर ने बोला कि कनेक्टिव टिश्यू की क्या स्पेशलिटी है, आपके दिमाग में आना चाहिए सर एपिथेलिया की क्या स्पेशलिटी है. दे आर क्लोजली पैक्ड. बीच में इंटरसेलुलर स्पेस. सर न्यूरल की क्या स्पेशलिटी है? उसके बाद एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है, इंपल्सेस को कंडक्ट करता है. सर मसल की क्या स्पेशलिटी है? उसके बाद मायोफाइब्रिल है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, और वो लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ कनेक्टिव टिश्यू, द स्पेशलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज, yes, they are made up of different types of cells, and if you observe over here, सेल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है कि नहीं है? सो हम कहेंगे दे शो द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस. अरे ये तो अपना एपिथेलिया के एग्जैक्टली उल्टा हो गया. कनेक्टिव टिश्यू आर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस. अब इतना सारा इंटरसेल्युलर स्पेस है, तो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए you will need a matrix. Very good. Extracellular matrix. So one property is intercellular space. The second property is it shows the presence of a jelly-like matrix. And so many times I have tell you, imagine a chikki, saingdane ka chikki. The saingdana are the cells, and the good is the matrix. The matrix will hold the cells together. It will help the tissue to perform its functions. Do you remember this point, Bachulo? Yes. So it shows the presence of intercellular space, and intercellular space is filled with the matrix. Another property is they show the presence of fine thread-like structures, and these thread-like structures are called fibers. Fibers is a specialty of most of the connective tissues, except few connective tissues like blood, which do not show the presence of fibers. Even adipose tissue does not show the presence of fibers. But according to the NCERT text, it is the blood which does not show the presence of fibers. Or else, most of the connective tissue will show the presence of fibers. Okay? Connective tissues, they show vascular nature as well as they show the presence of a nerve supply. Most of the connective tissues are vascular, except a tissue called cartilage. है ना cartilage? ये cartilage है. These are avascular. हाँ वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. Okay? So what are the few properties of connective tissues? That the connective tissues, number one, are dash in origin. They are used for dash and dash. Very good. They show the presence of many cells. And between the cells there is a intercellular space. And the intercellular space is filled with matrix. They show the presence of thread-like structures called fibers. And they are highly vascular with a nerve supply. Did you get this point? Yes. They are highly vascular with a nerve supply. मतलब उनके पास खुद का blood supply भी है और nerve supply. ठीक है everybody? Then connective tissues are classified into three basic types. Batch 1, can you tell me what are the three basic types? Connective tissue proper
connective tissue, and there is a specialized connective tissue. So, what are three types of connective tissues? Proper, dense, and specialized. Connective tissue proper shows the presence of, yes, it has more amount of cells. उसके पास cells क्या है? ज्यादा है. और अंदर फाइबर्स क्या है? कम है. कौन ज्यादा है? सेल्स. और फाइबर्स कैसे है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू. और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मोर नंबर ऑफ फाइबर्स है and there are less number of cells. Okay. So why is loose? Loose क्यों है? Because of the fibers कम. अगर fibers जास्त असते, it would have become घट्ट. You understand घट्ट? And घट्ट is called dense. Fibers कमी आहेत, so it has become loose. The loose connective tissue can either be, yes, loose areolar, loose adenicular, and loose reticular. बराबर है? एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, सबको याद करना पड़ेगा. कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. प्रॉपर मतलब कि ये एक्चुअली बाइंडिंग का काम करता है, इसलिए वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? प्रॉपर. क्योंकि कनेक्शन का अर्थ काय असतो? व्हाट डू यू मीन कनेक्टिव? जोड़ने वाला. तो ये एक्चुअल क्या काम करता है? जोड़ने वाला काम करता है. इसलिए इसको लोग क्या नाम यूज करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. बाकी भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके लिए खास एक टाइटल दे दिया. इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. उसमें आएगा एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर. ओके. सी, आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये पता चला है कि कुछ बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है. प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चार करने में. तर त्याचं सोल्युशन काय? गप्प बसणं. असं नाही ब्रश केल्यासारखं. नाही ब्रश नाही केलाय. काय करायला लागतं? बोलना पड़ता है. तो उससे क्या होता है? आपके ब्रेन में एक एरिया है, उसको बोलते हैं वर्निक एरिया. क्या होता है उसको? वर्निक एरिया. वो सुनती है, समझती है, अरे हाँ शब्द है. फिर एक दूसरी एरिया, उसको बोलते हैं ब्रोका. है ना उसका? ब्रोका. फिर वो आपके टंग को मूव करती है, एरियोलर. तो आप बोलेगा ही नहीं, तो वर्निकेस में जाएगा? ब्रोका बोल पाएगा? फिर ऐसे ही बैठा रहेगा, जैसे मातम में है. तो what are the three types? Areolar, adipose, reticular. इसका तो आवाज ही नहीं. What are the three types? Areolar, adipose, reticular. याद रहेगा अभी ये? Yes. The next one is what, बच्चों? Dense. And the dense connective tissues. Batch number 1, yes please. Regular and irregular. One is regular, and the other is irregular. And the regular is further classified into white fibrous. There is white fibrous and yellow elastic. छोटा सा क्लासिफिकेशन, बड़ा नहीं बच्चों. व्हाइट फाइबरस, येलो इलास्टिक. आधे जिनको मालूम है स्कैम है ना बच्चों. अब व्हाइट फाइबरस की कितने टाइप्स है? दो. They are sheets and tendons. Tendons are also called as cords. Yellow elastic also shows the presence of sheets and ligaments. And ligaments are also called as cords. Saru che? Understood everybody? Yes. All of you? Yes. Dense में कितने टाइप्स है? दो. रेगुलर और रेगुलर में व्हाइट फाइबर्स, येलो इलास्टिक. व्हाइट फाइबर्स में शीट्स और टेंडन्स. येलो इलास्टिक में भी शीट्स और लिगामेंट्स. और स्पेशलाइज्ड के अंदर तीन है. एक कौन सा बच्चों? स्केलेटल. और दूसरा कौन सा है? वैस्कुलर. और तीसरा कौन सा है? म्यूकॉइड. क्या होता है उसको? म्यूकॉइड. ओके.
स्केलेटल में कितने टाइप्स है? दो। कौन से बोन्स एंड आर्टरीज। और वैस्कुलर में कितने टाइप है? ब्लड एंड द लिम्फ। ठीक है, पहले कहा था मैंने छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डायरेक्ट याद हो गया। सो टेंस में कितने टाइप्स है? टू। कौन से? रेगुलर में कौन से टाइप्स है? व्हाइट फाइबर्स में कौन है? इलास्टिक में कौन है? स्पेशलाइज में कितने टाइप्स है? व्हाट आर दे? स्केलेटल में बोन्स एंड कार्टिलेज, वैस्कुलर में okay, and we will start our discussion with this issue, that is very well. Okay, but before we begin with the discussion, one thing, okay, when you talk about connective tissues, in the connective tissues you get three types of cells. तीन टाइप के सेल मिलते हैं जिनका जो सफिक्स है, क्या वर्ड यूज किया मैंने? सफिक्स can either be a class or a site. अब कुछ बच्चे पूछते हैं सफिक्स मतलब क्या? ये हमारा गौरव है, तो मैंने बोला गौरव डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो गया? सफिक्स। अच्छा, ये डॉक्टर सफिक्स लगता है कि प्रीफिक्स लगता है? लेकिन मैंने आज उसको क्या बना दिया? सफिक्स। तो कभी कभी ना सेल का ऐसा नाम होगा, एक्स ब्लास्ट, बराबर है? तो ब्लास्ट क्या हो गया? सफिक्स। और जब भी ऐसा सफिक्स आएगा ब्लास्ट, तो ब्लास्ट का मतलब होता है ये बनाता है, किसको बनाता है? मैट्रिक्स को और किसको? फाइबर्स। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स और फाइबर्स बनाने का काम किसका है? वो सेल्स जिसका सरनेम क्या है? ब्लास्ट। तो मतलब सफिक्स। अगर X क्लास है, सॉरी साइट पहले करते हैं, अगर X साइट है तो उसका मतलब होता है, अगर उसका सरनेम साइट है तो वो क्या करता है? मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है बच्चा? मैट्रिक्स को एज वेल एज किसको? फाइबर्स। ओके, और अगर उसके सरनेम में X क्लास आता है, इसका मतलब क्या करता है? वो डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व करता है बच्चे लोग? मैट्रिक्स। Got it? Ayana? Yes. Do you all understand? Yes. So in the connective tissue, how many types of surnames can come? Three. What are the three types? Blast, site. Correct? Blast means बनाने वाला, साइट मतलब उसको मेंटेन करना, और क्लास मतलब उसको, जैसे कुछ बच्चों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डर बनाता है, मतलब बिल्डर क्या हो गया? ब्लास्ट। आपकी सोसाइटी उसको मेंटेन करती है, तो क्या है? साइट। एक मैंने बुलडोजर लेके के तोड़ दिया उसको, क्लास। तो तोड़ने वालों को क्लास बोलते हैं, ओरिजिनल बनाने वालों को और मेंटेन करने वालों को साइट। ओके, सो नाउ विल बिगिन आवर स्टडी विद द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, the batch 2 students, will you write it from your friends from batch 1? Is it okay? क्या बोल रहा है? They don't give. Why do they don't give? Are you guys so competitive? हाँ? I don't think so. मार्क्स से लगा नहीं मेरे को बच्चों। जरा इसको करना, फोटो में मोबाइल से ले ले और ग्रुप पे डाल दे, चलेगा? हाँ? कासिम तू इसे पीएचडी कर लिया, तो तू क्या कर रहा है? बच्चों मार्क्स ही ऐसा एक्साइटिंग नहीं देखा मैंने कल रात को, क्यों ऐसा? हाँ, ऐसा होश उड़ाने वाले मार्क्स नहीं थे, क्यों? व्हाई? अभ्यास नहीं केला तुम लोगों ने? हाँ, अच्छा तुम लोगों के पास मार्क्स नहीं आया? ओह सॉरी, आई स्पिल्ड द बीन्स, आई एम सॉरी। माझ्याकडे आले। हाँ, 360 और 360 क्या? निकाल फोटो, बात करूंगा मैं बाद में उसके बारे में। इसमें निकाल लिया फोटो, ठीक। बंद रखें, ऑन किया फिर से? ऑन किया, ठीक।
एनसीईआरटी लर्न करने का, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का, ठीक है? यू विल डू इट, बट यू नीड टू डू इट, बोला ना? तो याद रहेगा सबको भी क्लासिफिकेशन पूरा? ओके। नहीं छोड़ दे, छोटी छोटी बात को टेंशन नहीं। यस सर, ब्लू शर्ट, third last bench. What's your name? Amaya. Tell me, Amaya, some properties of connective tissue. Property. क्या क्या समझा अभी तक कनेक्टिव टिश्यू का? Vascular. What are the thread-like structures called in that? Fibers. Does it have intercellular space? Yes. Lots of intercellular space. What are the three surnames that will get in the connective tissue? चिल्ला क्यों रहा है इतना? कहाँ भी जा रहा है? Oh, क्या पिकनिक पे आए तुम लोग? Now. So what are we looking at? Which tissue? Areola. Areolar connective tissue. Okay. The areolar connective tissue shows the presence of matrix. Then it shows the presence of fibers, and it is made up of cells. So the three things in the areolar connective tissue are matrix, fibers, and cells. Okay. The matrix is a jelly-like matrix. Okay, Gada matrix, something like that. It is made up of a chemical called hyaluronic acid. What is it made up of? Hyaluronic acid. उच्चार करायला लागेल ना? बोला hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. What is it? Hyaluronic acid. Okay. The fibers, they are of three types. Does these fibers have bonding to? These are called white fibers. Do you see these ones? Yes. They are called yellow fibers. And do you see these lines that I have drawn over here? Yes. Park, are you not well? Park, right? Omkar. Huh? Sora. Do you see those branchings over there, Uchilo? Yes. These are called reticular fibers.
काय म्हणायचं? रेग्युलर फायबर्स. किती प्रकारचे फायबर्स आहेत? 3. White, yellow, and reticular. Okay? So fibers are 3 types. Look at the white fibers and tell me, are they present singly or are they in bundles? Bundles. बरोबर ना? Are they straight or are they wavy? Wavy. Are they branched or are they unbranched? Unbranched. Very good. So white fibers are present in bundles. They are wavy. आवाज दे बच्चों. Wavy समझ ना? Yes. And they are unbranched. Okay. They are made up of a protein called as collagen. Which protein makes them? Collagen. Collagen. With respect to collagen, you remember 2 things. Collagen is the most abundant protein in the living world. I'm sorry. Collagen is the most abundant protein in the animal world. In the animal world. Okay? And another protein called rubisco. It is the most abundant protein in the entire world. Okay? So in the human body, which is the abundant protein, which is Collagen. collagen. Collagen on boiling with water results in the formation of gelatin. Gelatin, सुना है gelatin? Yes. And gelatin is used to make ice cream, chocolates. वो सब के लिए यूज होता है. और अगर gelatin का सोर्स एनिमल्स है, तो उस आइसक्रीम के ऊपर या उस चॉकलेट के ऊपर रेड डॉट आता है, नॉन वेजिटेरियन वाला रेड डॉट. समझा मेरा बात? तो कोलेजन का कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस है. बिकॉज ऑफ कोलेजन इन द फाइबर्स, these fibers become tough and rigid. How do the fibers become? Tough and rigid. Rigid समझता? Hard. Rigid is elastic or non-elastic? Non-elastic. That is the speciality of which fibers? White fibers? Yes. Did you get it? So white fibers are present in bundles. They are wavy and they are unbranched, made up of a protein called as collagen, and they give rigidity to the tissue, toughness to the tissue. Yellow fibers. Look at the yellow fibers at end. Are they in bundles or are they singly present? Singly. Are they straight or are they wavy? Straight. Are they branched or unbranched? Branched. Branches are ना उसमें से? Yes. So you said that the yellow ones, they are present, sir, singly. They are straight and they are branched. They are made up of a protein which is called elastin. What is the name of the protein? Elastin. Elastin. And they give flexibility. नाम से ही पता चल रहा है ना, elastin. Elastin मतलब elastic होता होगा. So it will give what which will flexibility to the tissue. Who is the third one? Reticular. They are thin, very thin, and they are highly branched. So whenever something is highly branched, the word uses reticulate. क्या word use करते हैं हम लोग? Reticulate. Reticulate का मतलब क्या होता है? Highly branched. तो आपने स्कूल में ना पत्तों के बारे में पढ़ा होगा, लीफ के बारे में, और आपने उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन वर्ड सुना है? रेटिकुलेट वेनेशन. तो वहां पे पत्ते कैसे रहते हैं? अंदर हाईली ब्रांच वेन्स उसकी. या तो रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? तो टेल मी स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला देखा है सब लोगों ने? कैसा है? रेटिकुलेट मतलब हाईली branched. So these fibers are also thin and they are highly branched. They are made up of a protein called reticulin, and what they give is, they give
internal support. That is an internal framework. क्या देते हैं वो लोग? इंटरनल सपोर्ट या फिर इंटरनल फ्रेमवर्क. आया बात समझ में सबको? आया ना? तो तीनों टाइप के फाइबर सबको समझ में आ गया? ओके. Between these fibers there are spaces called areolae. What are the spaces called? Areolae. That is why the name of the tissue is what? Areolar connective tissue. Got it? Yes, third last bench. Red shirt. Yes. What's your name? Samruti. Why is it called areolar connective tissue? The girl next to her. Yes, Mai, tell me. As it has spaces known as areolas, so it is named as areolar tissue. Sit down. As it has got spaces in between the fibers, the spaces are called as areolar, and that is why the tissue is called as areolar connective tissue. Okay. Let us talk about the different type of cells that are present. There are many different types. Okay. We are going to study only 4 to 5 types in that. That is there in your syllabus. The first type of cells are called fibroblast. What are the cells called, Buchilo? Fibroblast. Fibroblast. Okay. Fibroblast. Can anybody tell me what would be the function of fibroblast? Produce fibers. And matrix. Matrix. यहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स है और फाइबर्स बनाने वाला काम है वो कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट. इसलिए मैंने पहले बनाना बता दिया था कि अगर सरनेम में क्या आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स एंड प्रोड्यूस फाइबर. तो इजी हो गया ना? चलो. सो फाइब्रोब्लास्ट विल डू व्हाट? They will produce the matrix and then produce the fibers. ठीक है guys? Then there are amoeboid cells. Amoeboid. You understand amoeboid? Yes. Okay. Amoeba-like cells, irregular shaped cells. These are called macrophages or histiocytes. Remember this thing. क्या होते हैं cells को? Macrophages or histiocytes. And we'll remember the name what? Macrophage. Okay? इसका मतलब क्या होता है मैक्रोफेज का? जिसमें हमेशा वो वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ. मैक्रो मतलब बिग, माइक्रो म्हणजे स्मॉल, मैक्रो म्हणजे बिग. सो दे आर मैक्रो बिग फेज ईटर्स. दे आर बिग ईटर्स. असं. ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. बट अभी मैं समझाऊंगा एक्चुअली वो है क्या. ओके, इट इज एबल टू डू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज phagocytosis. What is the process called? Phagocytosis. What do you mean by phagocytosis? Engulf the Bacteria. okay. Phago मतलब eat. The cell will eat a solid substance. Cell will eat a Solid substance. It's called as phagocytosis. If the cell takes in a liquid, then it is called phagocytosis. So now there is a solid foreign particle. It could be bacteria, it could be dust particle, it could be anything. तो सबसे पहले मैक्रोफेज ने उसको देखा and you know the cell membrane will cover it from all the sides. Cell membrane will cover it from all the sides. इसको बोलते हैं engulf. क्या होता है उसको? Engulf मतलब कवर करना, मतलब घेर लेना. ओके, तो सबसे पहले सॉलिड पार्टिकल को क्या किया? चारों तरफ से engulf. And
सेल ने उसको अपने अंदर ले लिया और उसको एक वैक्यूल के अंदर जकड़ दिया, अटक कर दिया उसको। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, अंदर ले लिया। बराबर है। फिर अंदर आवाज दिया एक प्राइमरी लाइसोसोम, इसको आवाज दिया प्राइमरी लाइसोसोम, और ये प्राइमरी लाइसोसोम आके फ्यूज हो गया। किसके साथ फ्यूज हो गया बच्चों? इसके साथ, आया ना? और उसे अपने अंदर का सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर रिलीज किया। तो बताओ वो सॉलिड पार्टिकल वैसे रहेगा कि डाइजेस्ट हो जाएगा? तो इसने हेट्रोफैजी किया कि नहीं? आया ना? As a result of it, form a residual body, and that will be thrown out. So can I say it has engulfed? It has done endocytosis, and it has done lysis of a solid particle. मेरा टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आया सबको? एंगल्फ किया, एंगल्फ म्हणजे सेल ने पहले उसको क्या किया? घेर लिया, बराबर है। फिर सेल ने उसको अपने अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। फिर किसको बुलाया? फिर लाइसोसोम ने आके अपना एंजाइम रिलीज किया और अंदर वाली चीज को पूरा क्या किया? ब्रेक कर दिया। तो कितने स्टेप्स हुए बच्चों लोग? 3। कौन से 3 स्टेप्स हुए? ओके, आया ना? एनगल्फ सेल मेम्ब्रेन करता है। फिर वैक्यूल के अंदर उसको हम लोग बराबर। फिर आके उधर कौन ज्वाइन हो जाता है? फिर लाइसोसोम्स क्या रिलीज करते हैं अपने बराबर। फिर अंदर का जो सॉलिड पार्टिकल ऐसे रहेगा कि पूरा पिघल जाएगा। पिघल मतलब लाइसिस, पिघलना मतलब आपको समझाने, इट्स कोलोकियल वर्ड, मतलब तुमको समझाने के लिए, ठीक है? अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस? Then the third type of cells are the, क्या बोलेंगे इनको? Mast cells. What do you call them? mast cells, Mast cells. क्या नहीं बोलने का इनको? मस्त वस्त नहीं बोलेगा। हाँ? What do you call the cells? mast cells, Mast cells. Okay. These mast cells release 3 chemicals, and these 3 chemicals will be there throughout your life as doctors. ये 3 chemicals आपके लाइफ में हमेशा बार-बार आते रहेंगे, इसलिए आज ही अच्छे से समझना उसको और याद रखना। सबसे पहले मैंने बताया था जीएमसी में जाने के बाद। नंबर 1 हिस्टामाइन, हेपारिन, सेरोटोनिन। कितने केमिकल्स हैं? 3। कौन से? पहला वाला कौन है? हिस्टामाइन। दूसरा कौन है? हेपारिन। सुना है इसके बारे में? और थर्ड वाला कौन है? सेरोटोनिन। So what do the mast cells secrete? Heparin, serotonin. Learn these 3 names. Done? Have you heard of histamine, dear? आपने सुना histamine के बारे में? Heparin, I guess I have heard. नहीं, मैं पूछा histamine को, heparin Histamine. No? Okay. Has anybody heard of histamine, बच्चों? No? सुधा? क्या है बोलो? Have you heard of vasodilator? No. Extra term. Histamine is a vasodilator. Histamine is a vasodilator. मतलब क्या? Look over here, everybody. Do you see the blue pipe I have drawn? yes, That blue pipe is the blood vessel. Okay, you know now blood vessel? yes, Arteries are, veins are. So vaso मतलब blood vessel. For example,
arteries and veins. Vaso का मतलब क्या है? For example, dilator, increase the diameter. So what it will do, bachcho? It will increase the diameter of the blood vessels. So that is why it is called what? A vasodilator. Got it? Okay, everybody. Yes. So histamine is a vasodilator. अब समझो आप क्रिकेट खेल रहे हो कॉक बॉल से, सीजन बॉल से, और बॉल इधर लग गया ऐसा, तो क्या होता है उधर? सुजन आती है ना वहां पे। क्या बोलते हो आप लोग मराठी में उसको? हम लोग हमारे टेम्बू बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं? टेम्बू। The dialects keep on changing. ठीक है। तो as soon as you get hurt, वहां पे मास्ट सेल्स रप्चर होते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं? तो वो एरिया में वैसोडाइलेशन होता है, तो वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा कि कम होगा? तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी ज्यादा जाएंगे, प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटीन्स भी क्या होगी? ज्यादा जाएगी, तो वहां पे फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? इसलिए सूजन आता है। समझा मेरी बात? इट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। सूजन आना इज एन इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जैसे बुखार आना इज एन इम्यून रिस्पॉन्स। बुखार आना अच्छा है कि बुरा है बच्चों? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहने के लिए अच्छा लगता है, तो बॉडी क्या करती है? अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, 40 तक लेके जाती है ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम तक रहेगा तो इट कैन डैमेज योर न्यूरॉन्स, तब वो बुरा हो जाता है। और माय पॉइंट? सो बॉडी बुखार क्यों लेके आती है? ताकि वो अपना बचाव कर सके। समझा मेरी बात? सिमिलरली जब भी आपको कुछ लगता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो वो टाइम पे आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है? एलर्जिक रिएक्शन। ये वर्ड सुना मैंने आपका? वर्ड सुना एलर्जी? सुना ना एलर्जी? आप में से है किसी को एलर्जी? स्टडीज की एलर्जी है किसी को? है ना, स्टडी की तो एलर्जी है ना बहुत सारी बच्चे लोग। एनसीईआरटी लेते नहीं ना, एनसीईआरटी की एलर्जी नहीं चलेगी अपने को। तो once a dust particle, chalk powder या कुछ ऐसी दूसरी चीज आपके अंदर चली गई ब्लड के अंदर जो एलर्जिक है, तो बॉडी तुरंत क्या रिलीज करेगी बच्चों लोग? हिस्टामाइन। एंड जैसे हिस्टामाइन रिलीज होगा, ब्लड वेसल्स क्या होंगी? डायलेट, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा, और वहां पे क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। क्या होता है उसको? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। सो हिस्टामाइन is responsible for which response बच्चों लोग? Inflammatory response। समझा मेरी क्लास को बच्चों लोग? आया ना? Yes. Okay. If that excess release of histamine takes place, it causes an allergic reaction. जैसे have you heard of asthma? Yes. अस्थमा बोलते हैं आप लोग उसको। ऐसा wheezing का आवाज आता है कि नहीं आता है? That is excess release of histamine in your lungs. समझ लगा बोलो? Yes. अस्थमा मध्ये कोण जास्त रिलीज होतं? Histamine. कुठे? Lungs. So you know they have that pump. Yes. That has got antihistamine, and that antihistamine will go into your lungs and neutralize the histamine. So वो पंप लेने से तुरंत ऐसा रिलीफ मिलता है। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, which chemical is responsible for allergic reactions? Histamine. Which chemical is responsible for inflammatory reactions? Histamine. Inflammation is a defense mechanism. समझ लो? Just like fever is a defense mechanism, even inflammation is a defense. But if it is over, जरूरत से
Zyada. Then it will result into what? Allergic Allergic reaction. It will give you pain and it will damage the body. Okay? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स. क्या दोस्तों? Hyperimmune response. मतलब बॉडी ने जरूरत से ज्यादा सोल्जर्स भेज के रिस्पॉन्स दी. And that was the main problem that occurred during COVID-19 infections. That your body was giving a over response to a normal virus. आप समझ रहे मेरी बात? जैसे ये सर है छोटे से, इन्होंने मेरे क्लास में बात किया, तो मैंने ताप दुप दो दे दिया उसको, फिर बाहर लेके और उसको पेडिग्री दिया और स्टार्टर दे दिया और उसको गिरा दिया और उसको फेंक दिया रास्ते. अब क्या बोले सर, हमने एक्ट किया कि ओवर एक्ट किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था ना. तो जैसे उसको बोला दे भाई चुप बैठो, है ना. तो बॉडी क्या करा, कोविड-19 का वायरस आया, निकाला सब मशीन चालू कर दिया. वरना हिस्टामाइन, साइटोकाइनिन्स, डब्ल्यूबीसी, स्टॉर्म आ गया. स्टॉर्म समझ में आया? वादळ एकदम, जिसकी वजह से क्या हो गया, लंग्स डैमेज हो गए. तो वैसे वो 7-8 दिन में वायरस मरने ही वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये वो वायरस को मारने के चक्कर में हमने बॉडी सेल्स को इतना डैमेज कर दिया कि लंग्स उसके ऊपर उभर ही नहीं पाए. आप यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? कि आपने इतनी फायरिंग मार दी लंग्स के ऊपर कि वायरस तो मर गया, लेकिन उसके बाद लंग्स ठीक हो ही नहीं पाए. And that was the major cause of death in most of the people. On my point, that in certain people, the immune responses were over, exaggerated, जरूरत से ज्यादा. और आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है ना, तो और इम्यून रिस्पॉन्स देती है. और लोगों को कोविड सुन के डर लगता था. समझा मेरी बात? तो डॉक्टर बोलते थे डरो मत, डरो मत. क्यों नहीं मत डरो? आप जितना डरोगे आपकी इम्यून सिस्टम और भड़क जाएगी. आया ना? और लोग नाम सुनते डरते थे. Got it, everybody? So you'll remember this chemical, everybody. It is responsible for what? Inflammation. And in excess, it can cause what? Allergic reactions. The next is who? Heparin. Heparin. बहुत common आदमी है heparin. इसके बारे में शायद सुना होगा. Yes? In blood. It is there in blood. Yes. And it's an anticoagulant. Word सुना है ये? It is an anticoagulant. What do you call it? Anticoagulant. What do you mean by anticoagulant? It keeps your blood in the liquid state. आपके रक्त को, आपके ब्लड को कौन से स्टेट में रखता है? अगर मुझे ऐसा लग गया तो ब्लड वहां पे लिक्विड स्टेट में होता है कि सॉलिड स्टेट में होता है? उसको बोलते हैं कोएगुलेशन. क्या बोलते हैं उसको? Coagulation. लेकिन मेरे बॉडी के अंदर ब्लड लिक्विड स्टेट में. क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर एक केमिकल है. क्या नाम है उसका? Heparin. It's heparin. What is it? Heparin. Which is an Anticoagulant. which will keep my blood in the dash state, Liquid. so it can keep on flowing through my arteries, veins, and capillaries. What my point? Have you heard कि कभी-कभी ना कुछ सांप काटने की वजह से आपका ब्लड अंदर क्लॉट होता है? मतलब वो सांप का पॉइजन जो है वो आपके कौन से केमिकल पे एक्ट करता रहेगा? और उसको चालू रखता रहेगा कि बंद कर देता रहेगा? तो ब्लड अंदर के अंदर क्या होगा? क्लॉट होगा, गांठें बनना स्टार्ट करेंगे. सो सच अ पॉइजन इज कॉल्ड हीमोटॉक्सिन. ब्लड के ऊपर पॉइजन. अरे समझते ना रे बाबा? अकेला आदमी बोलते जा रहा है, बाबा जी का प्रवचन सुन रहे बोले. Clear everybody? Yes. So heparin is a inflammatory ना? Heparin is inflammation के ना? समझा लोग क्या समझा? Heparin is for inflammation. No. It is for what? Anticoagulant. And who is for inflammation? Histamine. The third one is who? Serotonin. क्या नाम उसका? Serotonin. And serotonin is a vasoconstrictor. क्या है वो? Vasoconstrictor. अब vasoconstrictor का मतलब क्या होगा? ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाएगा कि कम करेगा? जैसे अगर आपको कोई कट आ गया तो वो एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो ही ब्लड लॉस कम होगा ना.
तो वो एरिया में क्या रिलीज होगा, कौन सा केमिकल रिलीज होगा, and that serotonin will function as a vasoconstrictor. So will it increase the blood loss or will it reduce the blood loss? Reduce the blood loss. Are you following my point? Yes. So अगर आप गिर गए, आपको कट आ गया, तो वो एरिया में कौन सा केमिकल रिलीज होना चाहिए, तो आजू बाजू के ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा कि कम होगा, तो ब्लड लॉस होगा कि नहीं होगा, कम होगा. Okay, and these three chemicals are released by whom? So mast cells are releasing histamine. Okay, everybody. Yes. Should I continue? Yes. Then we have got which cells, bachalo? Do you see this cell over here? It is called as an adipocyte. Now the cell called Adipocyte. adipocyte. So let us see the adipocyte now. Okay. The adipocytes are cells which show the presence of a large fat droplet. So adipocytes क्या स्टोर करते हैं? Fat droplets. Okay. So in the center, they show the presence of a large fat droplet. As a result of which, the nucleus and the cytoplasm, is it in the center or has it been pushed towards the periphery? Pushed towards the periphery. Such a fat storage cell is called as adipocyte. ऐसा सेल जो अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है, फैट्स. उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट. ओके. अदर देन दैट, द सेल्स प्रेजेंट आर, क्या बोला मैंने, प्लाज्मा सेल्स, क्रोमैटोफोर्स, मेलानोसाइट्स. इससे अलग अलग होते हैं. ओके. ये सब आपको याद नहीं रखना, ठीक. ये लोग जब ये ना, दिस एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड योर मसल्स. सो जब ये लोग टैटू करते हैं ना, और ना टैटू, टैटू की इंक जो है, इट इज टेकन बाय द क्रोमैटोफोर्स एंड द मेलानोसाइट्स. सो इट रिमेन्स परमानेंटली ओवर देयर. समझा मेरा बात? ऐसा. I hope everybody understood the areolar tissue. Yes. So the areolar tissue is it a dense or a loose type? Loose type. Can I say it's a true connective tissue? Yes. It's a true connective tissue. It is present beneath the skin. It connects the skin to the muscles. It is present throughout your body. It shows the presence of fibers, cells, and the matrix. The matrix is made up of a chemical called, नहीं सुनाई दिया मुझे, hyaluronic acid. Fibers are of how many types? 3. What are 3 types of fibers? बराबर. Which fiber is made up of collagen? Which fibers are a little bit more elastic? Yellow. Name the chemical that is a vasoconstrictor. Serotonin. Who is a vasodilator? And who is an anticoagulant? What do you mean by anticoagulant? जो अपने खून को लिक्विड स्टेट में रखता है, और अगर वो ना हो तो ब्लड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल. तो हमको जब लगता है तो वहां पे हेपारिन काम करता है कि उसको बंद किया जाता है ताकि क्लॉटिंग हो जाए. ठीक है. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड बच्चों? व्हाट? नो. आस्क सम क्वेश्चंस. म्यूट कर दो. चलो. So what's the next issue? Adipose connective tissue. Don't write anything, huh? Adipose connective tissue. It's a modified areolar. जब areolar connective tissue change हो जाता है, modify हो जाता है, क्या modify हो जाता है? It shows the presence of a lot of cells
which are called as adipocytes. Now, do you remember adipocytes, everybody? Yes. उधर हम लोगों ने किया था ना adipocytes. Yes. What is the speciality of adipocytes? They show the presence of a fat droplet or a flat globule बोलते हैं droplet, and the nucleus and the cytoplasm is pushed towards the periphery. Got it, everybody? Now, the tissue is vascular. What do you mean by the tissue is vascular, Uchlo? That it has its own blood supply. Okay? इसको हम लोग हिंदी में चर्बी बोलते हैं, adipose tissue. It is present beneath the skin, around your important organs like your kidneys. Okay? But when it becomes in excess, जब जरूरत से ज्यादा होता है, ये एडिपोस टिश्यू जब ये एक्सेस में होता है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओबेसिटी. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओबेसिटी. व्हाट इज ओबेसिटी? मोटापा. ओके? एंड दैट, अगर ओबेसिटी हो गया, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर एडिपोस टिश्यू का क्वांटिटी बढ़ गया है, तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो हार्ट को भी उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं? ये पहले सिर्फ 4 ही घर थे, उनको ही पानी पहुंचाना था. अब वहां पे 100 घर हो गए, तो अभी जो ओरिजिनल पंप है उसके ऊपर प्रेशर, उसको ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है, एंड दैट कॉजेस हार्ट फेलियर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर, व्हिच इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. ओके? सो ओबेसिटी causes what, बच्चे लोग? Hypertension, high blood pressure. Because if you are obese, adipose tissue is more, blood capillaries increase, the pressure of the heart also increases. ठीक है? Now, in the case of infants मतलब नवजात शिशु, 2 साल के नीचे वाले बच्चे, उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स. They have a special type of fat called brown adipose tissue. It is brown because it is highly vascular. It shows the presence of pigments. You know the pigments, Uchalo? Yes. Which give it brownish color. And it shows the presence of a lot of mitochondria. As a result of which it can give 20 times more energy than the regular white fat which is present in you and me, because we are adults. Okay? बड़े लोगों में कौन सा फैट रहता है? White fat. और नवजात शिशु में कौन सा रहता है बच्चों? ब्राउन फैट्स. आया बात समझ में आप सबको? और ये जो ब्राउन फैट्स होते हैं, इसके अंदर 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देने की क्षमता है. इससे बच्चे लोग को जल्दी ठंडी नहीं लगता. बच्चे लोग, इफ यू विजिट एन आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, जहाँ पे बच्चों को रखते हैं, वहां पे you'll see that they don't wear sweaters and all. ऐसी ठंडी में रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास ज्यादा हीट प्रोडक्शन की एबिलिटी है. देखो, वो लोग का दूसरा कोई डाइट नहीं है ना, आपके ऐसा रोटी वगैरह नहीं खाते वो लोग, तो उनको कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और अगर उनके पास स्टोरेज और साइज भी छोटा है बॉडी का, तो छोटे साइज में कम एडिपोस टिश्यू रखते हुए भी उनको एनर्जी क्या मिलती है? ज्यादा, बिकॉज ऑफ ब्राउन. समझा? अपना 1 ग्राम फैट है, वो कितना एनर्जी देता है? अराउंड 7 किलो कैलोरीज. उनका 1 ग्राम ब्राउन एडिपोस टिश्यू है, वो कितना देगा? 20 टाइम्स मोर ना. मतलब कितना? 140. मतलब उनका थोड़ा सा भी फैट अपने बहुत ज्यादा फैट से भी कई ज्यादा एनर्जी से, तो उनके लिए एडवांटेज ही हो गया ना ये. बट जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाती है, आप दूसरी चीजें खाना चालू कर देते हो, धीरे धीरे ब्राउन एडिपोस टिश्यू का क्वांटिटी क्या हो जाता है? कम, और व्हाइट बढ़ जाता है. ओके? सो infants show which type of fats? Brown fats. Got it? Are fats good or bad for the body? They are good.
Okay, why are fat good बच्चों लोग? But excess में bad है. They have got many functions. सबसे पहले they can be the source of what बच्चों? Energy. हो सकता है energy source. They can do the function of protection from mechanical shocks. आपको खुद सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, सिर्फ मैकेनिकल शॉक से लिखने का. क्या लिखने का? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स. The kidneys are covered by what? Fats. As a result of your internal organs are covered by what? Fats. So directly कुछ इंजरी नहीं होती. ये लोग इंजरी को, मैकेनिकल इंजरी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. समझा ना? एब्जॉर्ब करना. तो जब मैंने मारा तो डायरेक्टली नहीं लगेगा, उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब. Then there are vitamins called fat soluble vitamins. सुना होगा ना? Okay. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. These are all what बच्चों? Fat soluble vitamins. बॉडी को अगर इन विटामिन्स को यूज करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? फैट्स. Then बच्चों, another importance of fats is it helps in the formation of steroidal hormones. There are some hormones in your body called testosterone, estrogen, progesterone. ये सारे हार्मोन्स जो है ये बनते किससे? फैट से. आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है बराबर? सेल मेम्ब्रेन को घट्टा कौन रखता है? विस्कस कौन रखता है? कोलेस्ट्रॉल. बराबर है? So that is why you need what? Cholesterol. Got it? And many more functions. But in excess they become dangerous. समझा मेरी बात? They increase the taste of food. खाना जो है, खाने में टेस्ट कौन देता है? ऑयल. कभी विदाउट ऑयल फूड खाया तुम लोग ने? एकदम बेकार रहेगा. समझा मेरा? खाया तू? हाँ? चॉकलेट वगैरह सा. I hope you got my point, everybody. So take down. We'll stop you today. Next time we'll continue.